न ऋते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामर्कम् मघवम् चित्रमर्चा अभिख्यानो मघवन्नाधमानान् सखे बोधिवसुपते सखीनाम् रणम् कृधिरणकृत्सत्यसुष्मा भक्ते चिदाभजाराये अस्मान् स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यजितिरनर्वणाः स्वस्ति पूषा ससुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्त्यये वायुमुपब्रवामहै सोमम् स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिम् सर्वगणम् स्वस्तये स्वस्त्यय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्ध्रुवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वम् हसः स्वस्ति इन्द्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो हरिरेकुधी स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दददाघ्नता जानता सङ्गमे मही स्वस्त्ययनन्तार्क्ष्यमरिष्टदेवीम् महद्भूतम् वायसम् देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखम् समत्सु बृहद्यशो नावविवारुहेम अम्भोमुचमाङ्गिरसङ्गयम् च स्वस्त्या प्रेयम् मनसा चतार्क्ष्यम् प्रयतमानिः शरणम् प्रपद्ये स्वस्ति संवादेष्वभयन्नो अस्तु भद्रम् वद दक्षिणतो भद्रमुत्तरतो वद भद्रम् पुरस्तान्नो वद भद्रम् पश्चात् कपिञ्जला भद्रम् वद पुत्रैर्भद्रम् वद गृहेषु च भद्रमस्माकम् नो वद भद्रम् नो अभयम् वद भद्रमधस्तान्नो वद भद्रमुपरिष्टान्नो वद भद्रम् भद्रम् न आवद भद्रम् नः सर्वतो वद असवत्नः पुरस्तान्नः शिवम् दक्षिणतस्कृधी अभयम् सततम् पश्चाद्भद्रमुत्तरतो गृहे यौवनानि महयसि जिज्ञुषामि वदुन्दुभिः शकुन्तकप्रदक्षिणम् शतपत्राभिनो वद आवदम् स्वम् शकुने भद्रमावदतूष्णीमासीनः सुमतिम् चिकिद्भिनः यदुत्पतन्वदसि कर्कलिर्यथा बृहद्वदेम विदथे सुवीराः जीमूतस्येव भवति प्रतीकम् यद्वर्मीयाति समदामुपस्थे अनाविद्धया तन्वाजयत्वम् सत्त्वा वर्मणो महिमापि पर्तु धन्वनागा धन्वना चिञ्जयेम धन्वना तीव्राः समदोजयेम धनुःशत्रोरपकामम् कृणोति धन्वना सर्वाः प्रदिशो जयेम भक्ष्यन्ति वेदागनीगन्ति कर्णम् प्रियम् सखायम् परिषश्वजाना योषे वशिण्ये विददाभिधन्वञ्जा इयम् समने पारयन्ति ते आचरन्ति समने वयोषा मादेव पुत्रम् विभृतामुपस्थे अपशत्रून् विध्यताम् संविधाने आर्त्नी इमे विस्फुरन्ति अमित्रान् बह्वीनाम् पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्चाकृणोति समनावगत्या इष
श्रुतिः सङ्गाः पृतनाश्च सर्वाः पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूतः रथे तिष्ठन् नयति वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते सुषारथिः अभीषूनाम् महिमानम् वनायतमनः पश्चादनुयच्छन्ति रश्मयाः तीव्रान् घोषान् कृण्वते वृषभानयोः श्वारथेभिः सह वाजयन्तः अवक्रामन्तः प्रपदैरमित्रान् क्षिणन्ति शत्रून् रथवाहनम् हविरस्य नाम यत्रायुधम् निहितमस्य वर्मा तत्र रथमुपशग्नम् सदेव विश्वाः वयम् सुमनस्यमानाः स्वादुशंसदः पितरो वयोधा कृच्छ्रेष्युतः शक्तिमन्तो गभीराः चित्रसेना इषुबला अमृद्धास्ततो वीरा पुरवो भ्रातसाहाः ब्राह्मणासः पितरः सोम्यासः शिवेनोऽद्या वा पृथिवी अनेहसा पूषानः पातु धृता वृधो रक्षामाकीर्णो अघशंस ईशदा संसमिद्युपसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्यः इडस्पते समिध्यसे स नो वसून्याभरा सङ्गच्छध्वम् संवदध्वम् सम्भोमनांसि जानताम् देवाभागम् यथा पूर्वे सञ्जानाना उवासते समानो मन्त्रः समितिः समानी समानम् मनः सह चित्तमेषाम् समानम् मन्त्रमभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि समानी वाकोतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वस्तु सहासति संसृष्ट्यम् धनमुभयम् समाकृतमस्मभ्यम् दत्ताम् वरुणश्च मन्युः भियम् दधाना हृदयेषु शत्रवः पराजितासोऽपरिलयन्ताम् यैमे रोदसी उभे अहमिन्द्रमतुष्टवम् विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेतम् भारतम् जनम् तच्छय्योरावृणीमहे गातुम् यज्ञाय गातुम् यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वम् जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। Thank you, thank you. As we begin this conclave, we must spotlight the vision that anchors this initiative. The vision that made us realize that Indology must move from the margins into the mainstream because it carries the vocabulary of who we are. Indology reminds us of the vast and rich civilizational heritage we belong to. And above all, it tells us that the essence of Bharat is a recurring investment to secure the soul of our nation for generations yet to come. हम एक ऐसी सभ्यता से आते हैं जिसने हजारों वर्षों में अनगिनत विचार और परंपराएं बनाई हैं। हर दौर में भारत ने जीवन को समझने के नए तरीके खोजे। हमारे ऋषि इस समझ के पहले मार्गदर्शक थे। ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया को समझने के कई रास्ते खोले। योग और आयुर्वेद, नाट्यशास्त्र और अर्थशास्त्र, रामायण और महाभारत, ये सिर्फ परंपराएं या कहानियां नहीं थीं। इन्होंने भारतीय जीवन को दिशा दी और हमारी सोच को आकार दिया। इंडोलॉजी इसी संसार का अध्ययन है, हमारी सभ्यता की वह नींव जिसने हमें हमारी पहचान दी। ये हमें भारत को भारत की ही नजर से देखने में मदद करती है।
लेकिन आज ज्ञान का सफर बदल चुका है। एआई, इंटरनेट और एल्गोरिदम्स अब नए कथाकार बन गए हैं। जो वे दिखाते हैं लोग उसे सच मान लेते हैं, और जो चीजें वे नहीं दिखाते वो धीरे धीरे लोगों की नजर से दूर होने लगती। यही असली चुनौती है। अगर हमारी संस्कृति और हमारे ग्रंथ इन डिजिटल प्रणालियों में सही तरह दर्ज नहीं हुए तो दुनिया जिस भारत को देखेगी वह हमारी असली पहचान से अलग हो सकता है। आने वाली पीढ़ियां भारत की वह छवि देखेंगी जो किसी और की सोच से बनी होगी। अगर हम अपनी कहानी खुद नहीं बताएंगे तो कोई और उसे अपने तरीके से बताएगा। इसीलिए इंडोलॉजी सिर्फ विद्वानों का विषय नहीं, हर उस भारतीय की जिम्मेदारी है जो अपनी सभ्यता को समझना और बचाना चाहता है। इंडोलॉजी का मतलब पीछे जाना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए तैयार होना है। एक ऐसी दुनिया में जहां जानकारी बहुत तेजी से चलती है पर समझ अक्सर पीछे रह जाती है, हम अपने ग्रंथों को डिजिटल रूप में सुरक्षित करते हैं, अपनी सोच को अपनी आवाज में प्रस्तुत करते हैं। हमें उन लोगों का साथ देना होगा जो अपनी जिंदगी हमारी विरासत को समझने में लगाते हैं। इंडोलॉजी भारत को यह ताकत देती है कि वह अपनी कहानी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ कह सके, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान की बात नहीं, ये पहचान और निरंतरता की बात है, और सुनिश्चित करती है कि भारत की कहानी भारत की आवाज में ही सुनी जाए, जो भारत को उसी रूप में दिखाएं जैसे हमारे ऋषियों ने उसे समझा था। इंडोलॉजी और एआई मिलकर एक अनोखा संगम बनाते हैं, अतीत की गहराई और भविष्य तक पहुंचने की ताकत। हमें उन लोगों का साथ देना होगा जो अपनी जिंदगी हमारी विरासत को समझने में लगाते हैं, और ऐसी तकनीक बनानी होगी जो भारत को उसकी अपनी शर्तों पर समझ सके, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान की बात नहीं, ये पहचान और निरंतरता की बात है। ये उन मूल्यों की रक्षा है जो हमें सदियों से मार्ग दिखाते आए हैं। इंडोलॉजी भारत को ये ताकत देती है कि वह अपनी कहानी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ कह सके, और सुनिश्चित करती है कि भारत की कहानी भारत की आवाज में ही सुनी जाए। We now invite on stage Mr. Sudipta Bhattacharya, Chief Transformation Officer of the Adani Group, to tell us how we got here. जगत गुरु शंकराचार्य जी, आपके साथ आए सभी स्वामी जीओ, गौतम अदानी जी, प्रीति जी, राजेश भाई, शिलिन बेन, अदानी फैमिली और मेरे दोस्तों तो यहीं भी है, और दोस्तों आज बहुत लोग बाहर से आए हुए हैं, पीपल हैव ट्रैवल फ्रॉम अब्रॉड, और काफी सारे यूनिवर्सिटी में लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर having joined us on this great day. In this auditorium, if there was one day where the walls echoed with joy, it was on the 24th of June 2024. That was a day of Shashti Purti, the birthday of our chairman. That was one day that was celebrated with immense joy. If there is another day today of equal significance, it is today. Because today is the birth of what we call the revival of Indian studies, Indian scriptures, Indology. And so thank you very much for everybody being here. Let me start off by talking about the whole philosophy of the Adani Group. And many of you have traveled from outside, and perhaps it would help if you understand the philosophy of how this group came about. We talk about this group having built some of the largest infrastructures in the world. We are building the world's largest renewable hybrid park. We run one of the world's largest ports. We run the largest fleet of airports. We run some of the largest data centers. But today is not about talking about what we are building. Today is about talking about flows. At a philosophical level, what the Adani Group does is we manage flows.
Let me explain. We are in the flows of moving people through our airport business. We are in the flows of moving goods through our ports business. We are in the business of moving data through our data center business. We are in the business of moving electrons to light up the entire country through our energy business. So at a very philosophical level, the way we keep India running is through managing India's flows. And that analogy is immensely helpful today for us because Bharat, our culture, is all about managing flows. The civilization of Bharat is about managing the flow of knowledge. It's about managing the flow of our culture. It is about managing the flow of our dharma. When we talk about Shruti to Smriti, what does that really mean? What we hear has to flow through the words we speak. That is exactly why our knowledge gets transferred from mothers to their children. Our knowledge was transferred from the gurus to the shishya. These were the flows that made us one of the greatest civilizations on the earth. And our objective today is to bring those flows back. From that perspective, let me take you how we came about with this concept and what happened on the momentous day of January 22nd last year when our Ram temple in Ayodhya was inaugurated. That was a day when we were with our chairman, and the chairman was watching the TV, and he was seeing the news, which clearly everything was about the inauguration of the temple of Ayodhya. Interestingly, the chairman was not speaking much. He was focused on listening to the news. And then when he spoke, it was in a very pensive way. The first comment he said is, yes, we are celebrating the temple. But think about Kaushalya, Lord or Bhagwan Ram's mother. Think about what she would have been feeling when she saw her son, who was destined to be the king, leave and go. What would she be thinking? Where are these stories? These are some of the stories of what a mother felt when her son departed. These are some of the feelings that our scriptures have captured. Where are these stories? So while it was a great occasion for the inauguration of the temple, but the stories that sat behind the stories were the most important ones. And that's what brought about this whole Indology Day, because what he said on that particular day is we have to do something that brings our culture back. And he said, let us make a small start. And what was that small start? That small start was to be able to go out and seek 14 years of vanvas, 14 years in exile. That's where the number 14 comes from. He said, let us go out and seek 14 young PhD scholars who are sitting somewhere in different parts of India and working on some topics that is important to the Bharat civilization. That's how the concept was formed on the 22nd of January, 2024. So we went out, we worked with IKS, the Indian Knowledge Systems, and the Ministry of Education, and we went through a process where we went out and surveyed several guides. So we got 14 gurus who actually had some great students working on different topics: Indian astronomy, Indian medicine, Ayurveda, Parini, all the different topics that made us one of the greatest civilizations. And that is how the whole thought process was nucleated. Fast forward to today, it's an absolute honor to be able to see so many of you from across the country and abroad come and join us. This is what our chairman says is the nucleating event. The nucleus is something that grows, that sprouts, that actually overtakes everything that we believe is not happening here in this country today. And that's the whole purpose of us being here on this particular day. I would be remiss if I didn't talk about all the immense help we have got from so many people across the country. Clearly from the Indian Knowledge System, the Ministry of Education has been very, very helpful. Several people from our team. You have this whole stage that was set up by Bobby Nair. You have Srini, who helped execute it from my team. You have Vishaka and her team, who put all of this together. But clearly, the biggest celebratory event is that we had Jagat Guru Shankaracharya
and all the Swamis come and be with us. So we are very, very, very grateful that we had a chance to celebrate this event in your presence, sir. So before I go, this is the first time we are doing this. And when we do something like this for the first time, there will be errors. So please give us feedback. If we have made any mistakes, please let us know. I seek forgiveness with folded hands. If we slip up somewhere, our attempt is to keep improving. And with that, thank you so very much. I'd now like to invite the one and only one, Shri Gautam Adani, my boss, and the man who's transforming Indian infrastructure, to come up on stage. Gautamji. नमस्कार। सबसे पहले मैं हमारे परम पूज्य मुख्य अतिथि उत्तराखंड से पधारे जगत गुरु शंकराचार्य जी को अपना प्रणाम अर्पित करता हूं। आप संयम आदि शंकराचार्य की जीवंत परंपरा के प्रतीक है। आपकी उपस्थिति इस सभा को पवित्र करती है और हमारे इस विनम्र प्रयास को एक धर्म कार्य का स्वरूप देती है। Also, my greetings to every scholar, student, and seeker gathered here today. I am thankful that so many of you have come from all corners of Bharat, and many from lands that lie beyond. I'm also deeply grateful to the Indian knowledge systems under the Ministry of Education for their support. Without their guidance, this Indology conference would not have been possible. My dear guests, let me start by explaining why we are here today and why a conference on Indology. We are the carriers of an epic civilizational adventure that has faced invasions, rebuilt multiple times after destructions, and carried his wisdom across thousands of years with unbroken tenacity. A civilization that refuses to break is also the one that learns how to build. जो सभ्यता राख में भी अग्नि जगाती, वही हर युग में नई धरती बसाती। Fast forward to today, and there can be no doubt that over the past decade, Bharat has not only been the world's fastest growing major economy, but it has also grown to become the fourth largest economy on the planet.
However, across history, no nation has sustained economic power without civilizational confidence. When a civilization knows who it is, its economy knows where it must go. The two have always been inseparable. But as we gather here today, the nature of the global battleground is rapidly changing. The gatekeepers of tomorrow will not be kings or conquerors. They will be algorithms that are silent and unseen. And these digital empires will either become the custodians of our civilizational principles or rewrite them. This is why we meet to debate Indology and to ensure that our heritage is preserved in the world that lies ahead. हम यहाँ अंतम मिलते हैं ताकि ज्ञान के दीप जलाए तथा युग युगांतरों तक भारत धर्म की धारा फैलाए. Now allow me to tell you how all of this started. And as always, behind every action sits a simple story, and here is mine. The initial years of my childhood were spent in Banaskantha in a North Gujarat. मेरा बचपन बनासकांठा के रेगिस्तान में बीता और लाखों हिंदुस्तानी बच्चों के ही तरह मेरी मां की गोद में ही मेरी पहली पाठशाला थी. Like millions of Indian children, my first classroom too was the lap of my mother. Every evening, as the golden sun set over our home, my mother would gather me and my siblings, and she would narrate episodes from our eternal epics, the Ramayana and the Mahabharata. She, Santaben, would tell us the stories about Prabhu Ram's 14-year exile, Sita Mata's devotion, the engineering wonder of the bridge to Lanka, the war with Ravan, the reunion of Prabhu Ram and Sita Mata, and then Sita Mata's separation again. From the Mahabharata, she spoke about Arjun's battlefield doubts and Krishna Bhagwan's words to Arjun to rise beyond family bonds and serve the purpose of Dharma. My mother was not just telling me stories. She was doing what every Indian mother does. She was shaping my sense of duty, devotion, and dharma. She would tell me, "Beta, રામની શક્તિ તેમના ધનુષમાં ન હતી,
તેમના ધર્મમાં હતી અને ધર્મની રક્ષા એ જ કરી શકે જે પોતાના સ્વાર્થને ભૂલીને પ્રજાના કલ્યાણ માટે પોતે દીપ બની જાય. Prabhu Ram's strength was never in his bow. It was in his dharma. It is only the one who forgets his own ego that can become a lamp for the welfare of his people. Every virtue in my mother's story had a name and a face. A wife like Sita, who lit the flame through the exile's night, turning her sorrow to strength and darkness to light. Brothers like Bharat and Lakshman, loyal and true, tied by dharma in everything that they do. My mother was not just narrating the principles from our epics. She was teaching me how to live them. Mata, Prathama Guru. The mother is indeed the first teacher. And perhaps, after all these years, it was her soft voice that resurfaced when the Ram temple was inaugurated in Ayodhya last year. In that moment, my heart turned not only to celebrations, but also to reflections on the 14 years Prabhu Ram spent in exile. जैसा कि आप सब जानते हैं, 14 साल कोई साधारण संख्या नहीं थी. वह धर्मधारा नियत काल था जिसने ये सुनिश्चित किया कि राम अयोध्या से निकले युवराज बनकर पर लौटे देवता बनकर. He left as the crown prince of a kingdom and returned not as a king he was expected to become, but as the god destiny had shaped him to be. And as Sudipta outlined, that is when the Indology idea took shape in my mind. My dear friends, as expected, since our announcement, I have often been asked, why does Indology matter? What is the objective of a 3-day global conference on Indology? Let me first address the questions. Why does Indology matter? And to do so, let me first define what Indology means to me. It is the disciplined study of our philosophies, art, medicine, mathematics, architectures, language, and governance. From zero to Vedic algorithms, Ayurveda's healing, to Vastu harmony, Arthshastra's statecraft, to our civilization values, Indology is about how to turn ideas into
institutions. And so, when we study Indology, we do not look back to live in history. We look forward so that the best of history lives through us. हम अतीत को इसलिए छूते कि राष्ट्र ज्योति उदित हो जाए, यथा अनंत काल तक भारत धर्म की किरण जगत में फैलाए. That, my friends, is the answer to the first questions, why Indology matters. My dear friends, when the roots of culture fade, the land turns dry and bare. But as long as values shine, darkness can never dare. When we speak of a civilizational setback, we often remember Nalanda. But Nalanda was not an exception. It was a pattern. Bharat's greatest injuries came from the systematic destructions of our knowledge infrastructures. Let me explain. Bhaktiar Khilji burned Nalanda, Vikramshila, and Odantapuri. In doing so, he did not just destroy libraries, he burnt the nerve center of Asian learning. Their fall erased hundreds of years of knowledge in a single generation. Then came another form of destruction, that of self-confidence. In 1835, Britisher Thomas Macaulay declared India's vast knowledge systems of no practical use. He forced a replacement of thousands of years of our traditional educational model with a clerk producing model. This was not a policy. It was a psychological war. It broke our civilizational self-confidence. And then again came the extractions. Tens of thousands of our manuscripts on astronomy, chemistry, metallurgy, Ayurveda, all shipped to Europe, translated, patented, repackaged, and credited as a Western discoveries. Our knowledge was shamelessly stolen and ruthlessly mined. Our attackers understood one thing with chilling precision, that civilizations do not fall by swords alone. They fall when their memory is left unguarded. And so they struck not just our people, but our libraries, our universities, and our stories, knowing that if memory breaks, then civilization bends. सभ्यताएं शस्त्रों से नहीं, शिथिल हुई स्मृतियों से ही टूटती है.
जहां स्मृति शून्य हो जाती, वही संस्कृति शरण में झुक जाती है। Together, they shattered our cultural confidence and fragmented the discipline of Indology itself. And so, this, my friends, is my answer to the second question, why we need a 3-day conclave on Indology. My dear friends, if those were the assaults of the past, today we face a challenge shaped differently, but just as dangerous. The new forms of invasions do not come with armies or flags. They do not even see themselves as invaders. They claim no territory, but they will seek something far more powerful: our attentions, our habits, and our imaginations. They enter offering tools that feel convenient but slowly shape how an entire society reads, thinks, and remembers. This has been the new phase of a soft warfare, control over cultural memory and a public thought. And today, this quite civilizational force has arrived in its most powerful form, artificial intelligence. The next frontier that will decide who leads and who follows. Therefore, with it comes the questions: are we ready for what comes next? My dear friends, let me begin by recognizing a simple truth: progress cannot be paused. And in the case of AI, it has arrived like a tidal force, relentless, unbounded, and utterly transformative. Artificial intelligence is not just another step forward. It is the most powerful inventions humanity has ever unlocked. It is a force reshaping how we work, learn, govern, and even imagine. It will either be our greatest leverage or the quiet thief of our identity. And as history teaches us, every transformative breakthrough carries a dark shadow. हर बड़ा महान परिवर्तन अपनी छाया साथ लिए चलता है। जहां उजाला होता है, वहीं अंधेरा भी पलता है। Just as the brilliance of nuclear power came with consequences that the world had to adapt, contain, and defend against, AI too brings with it a darker side. One that demands defending through wisdom, responsibility, and above all, preparations. In the context of Indology,
this transformative force begins with an unsettling truth. AI is already becoming the world's new teacher, the guide to our past, and the keeper of our civilizational memory. This is where the danger lies, because the mirror that AI holds up today to reflect our heritage is not our reflections. In its current state, AI has no real connections to the roots of our culture, no real understanding of the richness that has sustained us for over 5,000 years. And therefore, it threatens the very essence of the culture that defines who we are. यह हमारी संस्कृति ही नहीं, हमारे अस्तित्व के लिए भी एक चुनौती है. Allow me to now expand on the three new specific threats we now face. First is the threat of our invisibility. In the world of AI, there is a rule known as a data gravity. Manuscripts sitting in a fragmented scans are invisible to algorithms. If we do not digitize them, we are effectively erasing our own knowledge from the future. Second is the threat of a cultural compressions. Indic knowledge is deep. Concepts like dharma, shraddha, or purusharth are ecosystems of meaning requiring context and commentary. But LLMs flatten meanings. They turn dharma into duty and a moksha into salvation. Once context dies, culture dies. Third is the threat of an alien judgment. These AI models built on safety filters, rooted in Western norms, are like blindfolded gatekeepers, unable to recognize the essence of Vedic practices or the depth of our itihas. They often dismiss this ancient truth as a mythology or harmful, for they lack the cultural lens to understand them. Let me illustrate these three threats with one simple example. In the years ahead, when a child in Mumbai, a second generation Indian in Boston, or a yoga teacher in Berlin asks, "What is Dharma?" or "What is the essence of Gita?" They will not open a book or seek a teacher. They will ask a machine. And that, my friends,
is the real danger. Because if we are civilizations does not actively defend is a cultural and emotional frameworks, human behavior will bend not towards culture or traditions, but towards the cold logic of the machine's algorithms. This shift will be silent, gradual, and will reshape how we feel, learn, and analyze our own country. The transformation is inevitable, but it must be shaped by our intention and not by accident. So allow me to present 5 recommendations for Bharat to reclaim its intellectual agency in the age of algorithms. First, build the Bharat knowledge graph. Create a single digital source of truth, connecting our text, thinker, timelines, and ideas, so that AI learns from authenticate Bharat and not borrowed interpretations. Second, create an India-centric corpus. Launch a standardized Indology benchmark to test if AI understands Nyaya, Vedanta, and our philosophies. Mandate Indian data in every foreign model. Third, strengthen the human loop. Empower scholars to analyze, refine, and correct AI systems. Establish cultural discipline. All AI operating in India must align with our knowledge traditions. Fourth, invest in a human guardians. Establish Indology AI chairs across universities. Train scholars to speak Sanskrit and Python. Mobilize corporates to co-create next-gen cultural techno experts. And finally, make every college a new Nalanda. Build campuses where ancient wisdom meets modern innovations. Build centers for Bharat behavioral science, Bharat AI ethics, and Bharat data governance. So, my dear friends, as I begin to close, let me emphasize that we stand at a moment where two civilizations meet. The civilization we know as Bharat and the civilization we have come to know as AI. One is thousands of years old, the other very new. One carries the wisdom of saints, the other
the logic of algorithms. And what happens now in this decade will decide whether these two forces enrich each other or whether they confront each other. This is in our hands, and the responsibility of this scale cannot rest on the shoulders of scholars and institutions alone. Bharat's industry must also rise to its dharma and play its part. Our ancestors protected this knowledge through sacrifice, and today we must protect it through commitment. Therefore, as a beginning, I am humbled to announce a founding contributions of rupees 100 crores towards building the Bharat knowledge graph and supporting the scholars and technologists who will contribute to this Indology mission. This is the repayment of our civilizational debt. हम वह दायित्व निभा रहे हैं जो समय ने हमें सौंपा है। And I warmly invite every corporate house in our nation to stand with us and strengthen this effort. And that is why this Indology gathering is not just a conference, it is a declaration. A declaration that Bharat will not allow her culture to be fractured, diluted, or divided ever again. Are declarations that Bharat will not allow her memory to be rewritten as it was after Nalanda. Are declarations that Bharat will not allow her educations to be diluted as it was under the British chain. It is now upon us to build the data sets and algorithms that honor who we are, so that the stories our mothers told us of Prabhu Ram's sacrifices and Sita Ma's courage are never dismissed as a category called mythology. So that the principles of Dharma that our mothers shaped within us are not compressed into a hollow world called rules. So that the mantras and bhajans that our mothers sang for us are never reduced to a cold tag called content.
So let this conclave be remembered for a purpose that ensures when a child in Mumbai or an Indian teenager in Boston or a seeker in a Berlin ask their machine, what is dharma? The machine must answer with the wisdom of our mothers. The machine must answer with the truth of our Shastras, and the machine must answer with the knowledge each of you safeguards. And that, my dear friends, in the holy presence of Jagat Guru Shankaracharya ji is the true essence of this Indology Conclave. And so, we declared only Bharat will define Bharat. भारत का इतिहास भारत खुद लिखेगा. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. Thank you, Chairman. Ladies and gentlemen, in the long and often perilous sweep of India's civilizational journey, we have been fortunate that a few institutions have stood strong across the expanse of time as guardians of knowledge, clarity, and continuity. Foremost among them are the four Amnai Pithas established by Adi Shankaracharya over 12 centuries ago. Jyotirmat in the north, Sharada Peeth in the west, Govardhan Peeth in the east, and Sringeri Peeth in the south. Each was created to uphold the timeless principles of Advaita Vedanta and to ensure that the Vedic tradition was preserved with purity, discipline, and philosophical rigor. Today, we are immensely honored to have with us the Jagat Guru Shankaracharya of Jyotirmat, His Holiness Swami Avimukteswaranand Saraswati Ji, the 46th in an unbroken lineage of revered acharyas who trace their spiritual authority to Adi Shankaracharya himself. Some 12 centuries ago, Sri Adi Shankaracharya, an avatar of Lord Shiva, appeared to transform the spiritual landscape of Bharat through Vedic wisdom. He established 4 monastic centers at the cardinal points of Bharat to preserve and propagate the Sanatan Dharma. Located in the north is the Jyotirpeeth in Badrinath, promoting the Advaita Vedanta tradition of Hinduism. Heading the Jyotirmat is Sri Avimukteswaranand Saraswati Ji, who succeeded Swami Swarupanand Saraswati Ji as the 46th Shankaracharya of the Jyotirpeeth. Educated with degrees in Shastri and Acharya from the Sampurnanand Sanskrit University in Varanasi, he's been spreading Vedic philosophy and wisdom across the nation. He has also spearheaded movements like the Ganga Cleanup Initiative, Gadhwaj Sthapana Bharat Yatra, Ram Godham Project, among others. He's also been advocating large-scale initiatives to revive the Gurukul Pranali and Dharmic education, and has been serving the downtrodden through various programs. Sri Avimukteswaranand Saraswati Ji is in its true sense the beacon of Sanatan Dharma. We now request His Holiness Swami Avimukteswaranand Saraswati Ji, the Jagat Guru Shankaracharya of Jyotirmat, to address the conclave.
दारिद्र्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति या फलिनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानु मुञ्चन् त्वगः सः नारायण समारम्भाम् शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का आशीर्वचन आप सभी को प्राप्त हो उसके पूर्व परंपरा का परिपालन करते हुए विरुदावली का वाचन होगा और फिर हम सब महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावारपारीणाः यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्याचरण चक्रवर्तिनः अनादिगुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागम सार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्वकल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित श्रीमदाद्य जगद्गुरु शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योदितान्तःकरणाः अलकनन्दातीरवासिनः उत्तराम्नाय श्री ज्योतिर्मठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित श्रीमदविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्तेतराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की बद्री विशाल भगवान की अलकनंदा भवानी की पूर्णागिरी मैया की राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययम् धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में
विश्व का नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भारत को भारत के रूप में उद्भासित करने का एक स्वस्थ संकल्प लेकर आप सब और हम सब के साथ यहां पर बैठे श्री गौतम अडानी जी, उनके परिवार के सभी सदस्यजन, देश देशांतर से आए इस विधा के मर्मज्ञ आप सभी विद्वज्जन, अध्येताजन, मातृशक्ति, कहा जाता है कि जमाना बदल गया है। कहा यह भी जाता है कि जो लोग कंप्यूटर लिटरेट नहीं होंगे वो इलिटरेट माने जाएंगे। एआई का जमाना है, जहां देखो एआई एआई। यहां पर भी ये सभा तो इंडोलॉजी के लिए है, लेकिन एआई की चर्चा हो रही है। हमने देखा कि मंच पर जो बैनर लगा है पीछे, उसमें भी एआई, अडानी इंडोलॉजी, अडानी का ए और इंडोलॉजी का आई। और फिर सुदीप्तो जी ने बताया कि ये अडानी इंडोलॉजी इसलिए क्योंकि एक तिथि थी जिस दिन अयोध्या में कुछ हो रहा था। बहुत से लोग वहां पर गए हुए थे, बहुत से लोग नहीं भी जा पाए थे, सबके अपने कारण होंगे, लेकिन अब ये प्रमाणित हो रहा है धीरे धीरे कि असल में ऐसा कहना कि बहुत से लोग गए थे और बहुत से लोग नहीं जा पाए थे, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। क्योंकि जो नहीं गया था केवल इतना कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से नहीं गया था, मानसिक रूप से तो गया ही था। और उसका प्रमाण यहां मिल रहा है। क्या है प्रमाण? प्रमाण यह है कि गौतम भाई नहीं गए थे, वहां उपस्थित नहीं थे, तो कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं गए थे। क्यों? कि या तो इनका शरीर अयोध्या जाता या तो इनके अंदर अयोध्या आ जाता। ये अयोध्या नहीं गए थे, लेकिन अयोध्या इनके अंदर आ गया था, और वो भी एआई, अयोध्या इनसाइट। एआई ऐसा व्यापक शब्द बन गया है कि छा गया है, जिसको कहते हैं ना कि छा जाना। जो हम जान रहे हैं वो भी एआई से पूछ रहे हैं, जो ना जाने उसका पूछना तो बनता है, लेकिन जो हम जान रहे हैं उसको भी पूछ रहे हैं, और उसको पता नहीं है, वो बताया जा रहा है। कैसा मूर्ख है! जो नहीं जानता उसको बताना है, और बताना क्यों है? ताकि वो जान जाए। तो एक गुरु में जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता उस मशीन में नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रश्न दोनों के सामने रखे जाते हैं।
लेकिन जब गुरु के सामने आता है प्रश्न तो गुरु समझ लेता है ये पूछने वाला जान के पूछ रहा है कि जानने के लिए पूछ रहा है। और मशीन नहीं जानती कि ये जान के पूछ रहा है कि जानने के लिए पूछ रहा है, इसलिए इधर उधर से जो कुछ उसके पहले बताया गया है उतने में से बताती है। इसलिए ये मशीन का और मनुष्य की मेधा का संघर्ष है। ये हमारी सुविधा नहीं है, ये संघर्ष है। मशीन में और मस्तिष्क में लड़ाई हो रही और उस लड़ाई को एआई कहा जा रहा है। लड़ाई के अंत में क्या आएगा? अगर आजकल जैसे आप लोग लिखते हो अंग्रेजी के अक्षरों में हिंदी, अगर लड़ाई लिखोगे तो अंत में क्या आएगा? एआई। ये है एआई। गालियां दे रहे हैं लोग एआई को। आप पूछो एआई से कि अभी तक तुमको कितनी गाली मिल चुकी है, बताएगा। रोज गाली दे रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि पूछते कुछ है, बताता कुछ है। ये गुरु की गुणवत्ता है कि वो देखता है कि शिष्य कैसा है। जैसे डॉक्टर देखता है कि ये मरीज आनुवंशिक रूप से उसी रोग से ग्रसित है कि अभी अभी संक्रमण के कारण उसको रोग हो गया है, इसके शरीर का वजन कितना है, इसके शरीर के दूसरे रोगों का क्या कॉम्प्लिकेशन है, ये सब कैलकुलेट करता है, तब दवा देता है। उसी तरह से ये गुरु अपने सामने आए हुए प्रश्न पूछ रहे शिष्य को पहले तौलता है और फिर उसके अनुसार का ज्ञान उसी शब्दावली में उसको प्रस्तुत करता है। और ये प्राप्त करना मशीन के लिए कठिन है। अगर मशीन इस लक्ष्य को प्राप्त करती है तो जिस दिन इस लक्ष्य को प्राप्त करेगी उसी दिन वो भी मानव हो जाएगी। मशीन के रूप में यह प्राप्त करना कठिन है। मशीन अगर मानव हो जाए तो हो सकता है कि वो ये प्राप्त कर ले। इसलिए जो लोग मशीन से इसका अध्ययन करना चाहते हैं, मशीन से सब प्रश्नों का समाधान चाहते हैं, अंत में उनको निराशा मिलने वाली है। इसलिए एआई का जो कंसेप्ट है ये आपको एक बार तो विस्मित कर सकता है, एक बार चमत्कृत कर सकता है, लेकिन आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में संभवतः असमर्थ होगा। अस्तु, हम लोग यहां आए, गौतम भाई से मिले, प्रीति जी से मिले, राजेश जी से मिले और परिवार से मिले, सबसे चर्चा की और हमने पाया कि राजनीति के रूप से बहुत दिनों से एक नारा हम लोगों के बीच में आया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत से लोग पूछते हैं वो अच्छे दिन कब आएंगे, लेकिन आज यहां पर बैठ करके जितनी बातचीत हमारी हुई, जितना हमने अभी तक समझा, हम आप सबके बीच में कहना चाहते हैं, हो सकता है ये बात बाद में याद की जाए कि अच्छे दिन आने की शुरुआत हो रही है। क्योंकि अच्छे दिन भारत के कब आएंगे? जब भारत को भारत माना जाएगा। आज भारत को भारत नहीं माना जाता। आप यहां जो कार्ड हमको भेजा गया है हिंदी और अंग्रेजी में, हिंदी में लिखा है भारत विद्या का अध्ययन और अंग्रेजी में लिखा है इंडोलॉजी। भारत का अंग्रेजी इंडिया नहीं होता है, भारत का अनुवाद, भारत शब्द का अनुवाद, और इंडिया शब्द का अनुवाद भारत भी नहीं होता है। लेकिन देखिए गजब की बात कि हम यही करते हैं। जहां भारत लिखा होगा उसका अंग्रेजी अनुवाद करने का मौका आएगा, हम इंडिया बिना किसी हिचक के कर देंगे। आपका क्या दोष है? आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश का संविधान ही ऐसा बना हुआ है। उसकी 2 प्रतियां लिखी गई हैं,
एक प्रति नहीं लिखी गई, एक हिंदी में लिखी गई है और उसमें सबके हस्ताक्षर हुए हैं, और एक अंग्रेजी में लिखी गई है, उसमें सबके हस्ताक्षर हुए हैं। माने दोनों ऑथेंटिक हैं। 2 प्रतियां इसकी प्रामाणिक हैं भारत के संविधान की। दुनिया में कभी कोई कागज 2 तरह का ऑथेंटिकेटेड नहीं होता है, उसकी अनुवाद होते हैं, एक ही प्रामाणिक होता है। लेकिन ये हमारा भारत देश है जहां का संविधान 2 भाषा में लिखा गया है और दोनों मूल प्रति है। और दोनों की विशेषता क्या है? एक में हमारे देश का नाम भारत लिखा गया है और एक में हमारे देश का नाम इंडिया लिखा गया है। हम भारत के लोग, हिंदी आप संविधान पढ़ेंगे भारत का तो उसकी प्रस्तावना में आपको मिलेगा हम भारत के लोग, आगे फिर दूसरी बात। और जब अंग्रेजी वाला पढ़ेंगे, वो भी मूल प्रति है, तब उसमें क्या लिखा मिलेगा? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्या है? हम भारत हैं कि हम इंडिया हैं? नहीं, हम तो भारत भी हैं, हम तो इंडिया भी हैं। अरे तो फिर सब कुछ हो जाओ। एक से जब आप आगे बढ़ गए तो फिर तो अनेक हो गया। 2 ही शब्द होता है, या तो एक या तो अनेक। फिर तो आपको किसी भी नाम से कोई बुलाएगा तो हर नाम को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए आपका ऑफिशियल नाम एक ही हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा आप संक्षिप्त कर सकते हैं उसको। गौतम अडानी जी अडानी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। विश्व में कुछ देश हैं जिन्होंने अपने संक्षिप्त रूप को भी चलाया हुआ है, लेकिन संविधान में स्वीकार नहीं। यूके नाम से कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम, लेकिन उनका संविधान नहीं कहता है, ये केवल चलन में है। ये केवल भारत पूरे विश्व में एकमात्र देश है जिसके ऑफिशियल 2 नाम हैं, एक है भारत और दूसरा है इंडिया। इसलिए सबसे पहला प्रश्न तो यहां पर यह खड़ा होता है कि हम इंडोलॉजी पढ़ें कि भारतोलॉजी पढ़ें। अब अपने लोग आलोचना में जाएंगे तो एक अलग रास्ता निकल के आएगा, समाधान में जाएंगे तो एक अलग रास्ता निकल के आएगा। और समाधान क्या है? समाधान यह है कि एक चीज को 2 तरह से देखा जाता है, एक अंदर से और दूसरा बाहर से। सबको मौका नहीं है। ये सुदीप तो हैं, ये गौतम जी हैं, ये हम हैं कि वहां बैठ के मंच भी देख रहे थे और यहां बैठ कर आप लोगों को भी देख रहे हैं। सब लोग थोड़े देख पा रहे हैं। आप एक तरफ से देख रहे हैं, केवल मंच को देख रहे हैं, और हमने वहां बैठ के पहले मंच को देखा, अब मंच से आपको देख रहे हैं। 2 दृष्टि है ना। तो जो भारत के प्रति विदेशियों की दृष्टि है, उस दृष्टि का नाम है इंडोलॉजी। और भारत में रह करके भारत को देखने वाली जो दृष्टि है, उस दृष्टि को भारत विद्या कहेंगे। अनुवाद कोई करना चाहे तो भारतोलॉजी कर ले, कोई बाधा नहीं, क्योंकि भारत की जो अध्ययन सामग्री है वो भारतोलॉजी ही होगी। तो भारत जो है उसको समझना है। हमने एआई से पूछा, ये इंडोलॉजी एक विषय बन गया है, ये कब से शुरू हुआ? हमने सोचा जरा एआई से पूछ लेते हैं। तो हमने एआई से पूछा इंडोलॉजी विषय कब से बना। तो इंडोलॉजी ने हमको बताया कि जब एशियाटिक सोसाइटी की शुरुआत हुई, वहां से इंडोलॉजी कहा जाता है। एशियाटिक सोसाइटी के आरंभ से डॉक्टर जॉन ने शुरू किया। बाद में मैक्स मूलर आए, उन्होंने ओरिएंटलिज्म शुरू किया, प्राच्य अध्ययन। उन्हीं के प्रभाव में
काशी के हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विद्या धर्म विज्ञान संकाय बना हुआ है। वहां पर प्राच्य विद्या का अध्ययन हो रहा है। अरे प्राच्य विद्या जो है वो क्या आज की विद्या नहीं है? जो प्राच्य है वो अर्वाच्य नहीं हो सकती, और जो अर्वाच्य है वो प्राच्य नहीं हो सकता। लेकिन कोई चीज ऐसी होती है जो प्राच्य होकर के भी अर्वाच्य होती है और अर्वाच्य होकर के भी प्राच्य होती है। भारत की विद्या तो वो विद्या है जो नित्य नवीन होती है। एआई से पूछने पर बताता है कि एशियाटिक सोसाइटी से भारत अध्ययन आरंभ हुआ। हमारे पास आज सवेरे गार्गी पंडित जी हैं, यहां आई हुई हैं, विदुषी हैं, आपके बड़ौदा की रहने वाली। हमने उनसे पूछा कि ये इंडोलॉजी क्या है, कब से शुरू हुई? तो उन्होंने कहा कि छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के प्रथम प्रपाठक को देखिए महाराज जी। हमने कहा क्या है वहां पर? तो उन्होंने बताया कि सनत कुमार जी नारद जी से पूछ रहे हैं कि बताओ तुमने क्या क्या पढ़ा है। तो नारद जी उनको जो बता रहे हैं वही इंडोलॉजी है। इसका मतलब है कि उपनिषद से शुरू हो गई हमारी इंडोलॉजी, और एआई बता रहा है कि अभी 18वीं शताब्दी में शुरू हुई। अगर हम एआई के भरोसे पर हो जाएंगे तब तो हमारा कल्याण, मतलब व्यंग्य में कहें तो हो गया, ऐसे कल्याण नहीं होगा।